Hello everyone. Already we have discussed the non-aqueous titration in a previous presentation. So in this part, we will discuss the theory. Actually, we discuss the theory part of the non-aqueous titration. जो non-aqueous titration की theory है, उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जैसे वाटर है, जैसे वाटर की बात करें पहले H2O वाटर. आपको ये पता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, एसिड अगर इसको मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, it will behave as a base. It will be immediately attract from the proton and converted into the hydronium. H3O positive में convert होता है. Means it will compete with RNH2. RNH2 is the alkylamine group. It is a weak base actually. So alkyl it will be compete with this alkylamine. So alkylamine भी जो H+ आयन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके it will be converted into the RNH3 positive. So the reaction will be influenced. The water will compete with these RNH2. So competition के कारण, competitive analog होने के कारण ये जो है वाटर जो है immediately action produce करता है and it will react from the H+ ion and converted into the hydronium. यदि मान लीजिए कोई बेस है, जैसा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, अगर कोई बेस है, B से we are representing here from the B, so it will be immediately gives the OH minus ion plus BH positive. Means यदि हमारे पास कोई अल्कोहल है ROH, anyone alcohol is there, so it will competes with alcohol also. So it will react from the B, alcohol will react from the B. You know that what it will do? It will release the OH minus ion. Means in the presence of base, यहाँ पे लिख दिया मैंने RH positive. So it competes also with water, competes also with alcoholic part. Competes with this alcohol. So अगर हम लोग weak acid ले लें या हम लोग क्या ले लें, weak base ले लें या weak acid ले लें, दोनों ही कंडीशन में वाटर इसको कॉम्पीट करता है. सो व्हाट ड्यू टू दिस कंपटीशन व्हाट we will prefer the most of the organic solvent. Various organic solvents are available in place of water. We will prefer the organic solvents. Various organic solvents we can use now. We will prefer the organic solvents. Okay. So it's a reason we cannot prefer the water in a non-aqueous titration, in a titration. दूसरी तरफ मैंने एक लाइन लिखी है, it is based on basically the non-aqueous titration is based upon the Bronsted and Lowry and Lewis theory of the acid and bases. So Bronsted and Lowry, you know that according to the Bronsted and Lowry, acids are those substances which donate the proton and base are those substances which those accept the proton. acid proton donor होते हैं, base proton acceptor होते हैं. ऐसे यदि मैं लुईस एसिड बेस लुईस थ्योरी की बात करूं तो आपको पता है लुईस के अकॉर्डिंगली बेस जो होते हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं. लुईस जो होता है वो लुईस थ्योरम में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, याद रखिएगा. सो जो बेस होता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और जो एसिड होता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, आपको पता है. ठीक है, जस्ट लाइक बहुत एग्जांपल है इसके NH3 BF3. NH3 का यदि मान लीजिए ले लूं मैं NH3, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डोनेट करता है, तो ये कैसा है, बेसिक नेचर का है. और यदि BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, तो ये इस लोन पेयर को लेने का कैपेबिलिटी रखता है, तो ये क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, एसिड होता है. तो ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है. सो non-aqueous titration का थ्योरी इज बेस्ड ऑन concept of Bronsted and Lowry and Lewis acid base theories. दूसरी तरफ हम बात करते हैं, जस्ट लाइक वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द which substances, just like some actually acids and some bases are titrated through the non-aqueous titration. So which acid are titrated in a non-aqueous titration? We included the various acids like halides, acid halides, acid anhydride. Some important acids are here. First acids are here.
acids are like a acid halides, acid anhydrides. Okay, acid anhydrides. Lot of the acids are barbiturates. Okay, a lot of the acids are generally etc. titrated acid. These are the acids which are titrated by the non-aqueous titration. These are the different acids. Okay. On the other side, various base are which can be titrated by the non-aqueous titration. So what are the base? Those we will titrated in a non-aqueous titration, just like a various compound, quaternary ammonium compound, alkaline salt of the quaternary ammonium compound, salts of organic acid compound. So these are the various base which will be titrated, types of compound that may be titrated or a base. You can also take the example of amines, nitrogen containing amines are also nitrogen containing heterocyclic compound. So these are the acidic, weak nature of acidic and weak nature of basic compound which are titrated under the non-aqueous titration. So actually it is the important point, just you understand and logically you can perform the non-aqueous titration. Thank you. Thanks to all.